सदन के अंदर, सदन के बाहर हमेशा उन मुद्दों को उठाया है जो आम नागरिक से जुड़े मुद्दे हैं। उनमें से बड़ा प्रमुख मुद्दा है हमारी अर्थव्यवस्था का, हमारी इकोनॉमी का। जून 2024 में लोकसभा के परिणाम आए थे, उसमें जिन लोगों ने दावे किए थे 300 पार, 400 पार, उनको जनता ने आईना दिखाया और एक खंडित जनादेश आया जिसमें किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला और बैसाखियों के साथ भाजपा ने सरकार का निर्माण किया। अब 1 तारीख को बजट प्रस्तुत किया जाएगा, तो हमारी जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से, पक्ष की तरफ से जो बहुत महत्वपूर्ण एक मांग और एक इशू है, हम बताना चाह रहे हैं, वो इशू है जीएसटी का। जीएसटी एक कंजम्पशन टैक्स है जो उपभोक्ताओं से वसूल किया जाता है। तो जब भी सरकार के आंकड़े आते हैं कि रिकॉर्ड जीएसटी कलेक्शन, रिकॉर्ड ब्रेकिंग जीएसटी कलेक्शन, वो बेसिकली मध्यम वर्ग से, मिडिल क्लासेस से जो इनडायरेक्ट टैक्स दिया जाता है उसका जिक्र करते हैं। इस देश में इनकम टैक्स देने वाले लोगों की संख्या सिर्फ 5% है और जीएसटी सभी नागरिक इनडायरेक्टली दे रहे हैं। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा जो भार पड़ रहा है वो प्रोफेशनल्स, मध्यम वर्ग और जो लोग आमदनी कमा रहे हैं उनके ऊपर पड़ता है। सरकार ने अनेकों स्लैब बना दिए हैं और मजे की बात यह है कि जब यूपीए सरकार ने पहली बार जीएसटी की कल्पना की थी, जीएसटी का किया था और सिर्फ जीएसटी का विरोध नहीं किया था। जब मनमोहन सिंह जी सरकार में हमने पहली बार आधार कार्ड का प्रयोग किया था, तब बीजेपी ने पुरजोर विरोध आधार कार्ड का किया था, यूआईडी का किया था, डीबीटी जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है जिसका बहुत भाजपा प्रचार करती है। जब पहली बार हम लोगों ने राजस्थान के एक छोटा कस्बा है कोट कासिम, वहां पहली बार डीबीटी के माध्यम से एलपीजी की सब्सिडी, तो केंद्र सरकार का बहुत विरोध भाजपा ने किया था। आर्थिक मुद्दों पर एफडीआई रिटेल के अंदर भाजपा ने विरोध किया, आज उसकी वो एडवोकेट बन गए हैं। एफडीआई इन डिफेंस सेक्टर बीजेपी ने पुरजोर विरोध किया था, आज उसके वो प्रमोटर बन गए हैं। तो अपने स्टैंड को लगातार भाजपा बदल रही है। जीएसटी का विरोध करने वाले, और जीएसटी काउंसिल में जब चर्चा होती थी तो गुजरात के तब के मुख्यमंत्री मोदी जी इसका पूरा विरोध करते थे और जीएसटी जब लागू करी बीजेपी सरकार ने तो रात के 12 बजे सदन के अंदर बहुत माहौल बनाकर जैसे उन्हें आविष्कार किया है और एक फ्लॉड जीएसटी इंप्लीमेंट किया है। फ्लॉड में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हर सरकार को आमदनी बढ़ानी होती है। ये सरकार आमदनी बढ़ा रही है चंद लोगों की और बहुत सीमित जो वर्ग है। आप आंकड़े देखिएगा, कॉर्पोरेट्स को 2 लाख करोड़ का टैक्स ब्रेक और मध्यम वर्ग से आप जीएसटी वसूल रहे हैं। जीएसटी जब जनता का आप लगातार ले रहे हैं तो उनको कोई राहत नहीं मिल रही है। इन्फ्लेशन और महंगाई और खासकर जो फूड प्राइस इन्फ्लेशन है वो रिकॉर्ड तोड़ रहा है। हर चीज, एलपीजी सिलेंडर हो, खाद्य पदार्थ हो, रोजमर्रा की चीजें हो, उसके दाम बढ़ रहे हैं। तो अब समय आ गया है कि सरकार को जीएसटी 2.0 लाना पड़ेगा और लाना चाहिए। उसमें इतनी सारी स्लैब्स बनी हैं। अब बहुत एक चर्चित उदाहरण है पॉपकॉर्न का। अब उसमें 3 तरह के टैक्स लगा रखे हैं। जो छोटा व्यापारी है उसकी वो पालना नहीं कर सकते हैं। इतना जटिल, इतना मुश्किल, इतना कॉम्प्लिकेटेड ये प्रोसेस है कि छोटा व्यापारी इस जीएसटी को कंप्लाई नहीं कर पाता है तो उस पर आतंक आता है, इंस्पेक्टर्स का और डिपार्टमेंट का नोटिस आते हैं, उसका शोषण होता है। वैसे ही पूरे देश की एजेंसीज हैं जो इनकम टैक्स है, रेवेन्यू सर्विसेज हैं, जीएसटी के इंस्पेक्टर्स हैं, लेबर इंस्पेक्टर हैं, वो तमाम आतंक मचा के रखते हैं। और ईडी सीडी की तो बात ही मैं नहीं करूंगा, आप सब जानते हैं। लेकिन अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए मध्यम वर्ग के ऊपर जो भार डाला है सरकार ने, उसको कम करने का समय आ चुका है। तो हमारी मांग है केंद्र सरकार से, वित्त मंत्री महोदया से, कि आंकड़ों के जाल में जनता को ना फंसाएं, स्लैब्स को रैशनलाइज करें, जीएसटी के माध्यम से मध्यम वर्ग पर जो भार पड़ रहा है और जो गृहिणी हैं जो 10-20 हजार रुपये महीने कमाते हैं, उन्हें तो अपने 2 बच्चे पालने होते हैं, उनके ऊपर मैक्सिमम दबाव उन पे है। और चंद उद्योगपति जो हजारों लाखों करोड़ के मालिक हैं, उनको लगातार आप टैक्स ब्रेक दे रहे हैं। लाखों करोड़ रुपए का टैक्स ब्रेक चंद लोगों को, और
80% जो देश की आबादी है उसके ऊपर आप जीएसटी का जो बोझ डाल रहे हैं उसके विरोध में हम लोग हैं। इस पर कई बार खड़गे जी ने, राहुल गांधी जी ने, कांग्रेस पार्टी ने अपनी बात रखी है, क्योंकि अब 2-3 हफ्तों के अंदर बजट पेश होगा तो हम चाहते हैं कि केंद्र सरकार जो जनता की भावना है उसको समझे और जीएसटी के मामले में अपनी जिद को छोड़े। ये सरकार जिद की सरकार है। भाजपा में अपनी बात जो कह दी तो कह दी, चाहे वो नोटबंदी हो, चाहे वो लॉकडाउन की बात हो, जिन बातों को कंसेंसस बना के करना चाहिए उसको वो करती नहीं। जीएसटी का जो पहला प्रपोजल आया था वो हमारी सरकार में आया था। स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी की गवर्नमेंट ने इसको पहली बार प्रस्तुत किया था, क्योंकि इससे एक आपका टैक्स कलेक्शन बाइडन हो सकता है। लेकिन पिछले 10 सालों में टैक्स कलेक्शन का पूरा जोर, पूरी जिम्मेदारी और पूरा बर्डन मध्यम वर्ग और लो इनकम फैमिलीज के ऊपर पड़ रहा है। हम लोग चाहते हैं कि इसको रैशनलाइज किया जाए, इसको नेहरू पे पेश किया जाए और टैक्स टेररिज्म, देश में नागरिकों के ऊपर जो एक खतरे के बादल मंडराते रहते हैं, वो सरकार का दबाव का टैक्टिक्स है। और जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स को सुप्रीम कोर्ट इलीगल घोषित कर चुका है, वो भी हजारों करोड़ रुपए आज भाजपा के खाते में जमा है। और चुनाव से ठीक पहले सरकार कांग्रेस के बैंक अकाउंट्स को सीज करती है। तो ये इकोनॉमिक जो दबाव है, आर्थिक दबाव है, ये पॉलिटिकल हम लोगों पर है जो है, लेकिन आम जनता को जो तकलीफ हो रही है उसके विरोध में कांग्रेस पार्टी है। और अगर कोई ऐसा प्रैक्टिकल जनता के हित में ये सरकार प्रपोजल लेकर आती है, उसका हम समर्थन करने को तैयार है। ऐसा नहीं है कि हम विरोध करें क्योंकि विपक्ष में है, लेकिन जनता त्राही कर रही है। महंगाई से हर व्यक्ति, हर परिवार परेशान है, ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में, और जहां हम आज बैठे हैं ये देश की आर्थिक राजधानी है। तो यहां पर भी हम लोगों को केंद्र सरकार को आगाह करने के लिए आए हैं कि पूरे देश भर में मांग उठ रही है कि इसको आप रैशनलाइज करिए। कमजोर वर्ग, मीडियम इनकम फैमिलीज, मिडिल क्लासेस को आप राहत देने का काम करिए। और सिर्फ ये कैंपेन, अखबार, इश्तिहार, होर्डिंग, इनसे काम नहीं चलेगा। अर्थव्यवस्था को बेहतर करने के लिए जो कॉर्पोरेट्स को आप लगातार राहत देते हैं, टैक्स ब्रेक देते हैं, गवर्नमेंट के आसान से उनको लोन मिल जाते हैं, और निजीकरण और प्राइवेटाइजेशन भी सरकार जो करती है वो पारदर्शी तरीके से करे। कांग्रेस पार्टी उद्योग के पक्ष में है, कांग्रेस पार्टी निवेश के पक्ष में है, कांग्रेस पार्टी इन्वेस्टमेंट्स के पक्ष में है। लेकिन जो सरकार में देश की संपत्ति है उसका जो ट्रीटमेंट है, उसका जो डिस्पोजल है, वो मनमाने तरीके से आप सीमित लोगों को देना चाहते हैं, उनको मदद करना चाहते हैं। ये मैं समझता हूं देश के साथ एक धोखा है। इसलिए आर्थिक मामलों पर इस सरकार की जो अब तक का कामयाबी रही है, जो दिखाते हैं वो सिर्फ कागजी है। और ये कहना कि देश में हम इतने $1 ट्रिलियन कमा रहे हैं और हमारी अर्थव्यवस्था बहुत बेहतर हो रही है, इतना बड़ा मुल्क है भाई, 140 करोड़ लोग मेहनत करते हैं तब जाके देश आगे बढ़ रहा है। लेकिन सरकार को जो इनका फेवरेटिज्म है, जो पक्षपात की रणनीति करते हैं, उससे बचकर जनता का ध्यान देना चाहिए। और जीएसटी 2.0 उन लोगों को लागू करना पड़ेगा जहां पर स्लैब्स को रैशनलाइज किया जाए और मध्यम वर्ग के ऊपर भार कम पड़े। इस बात की मांग हम लोग करते हैं। जीएसटी का एक ही रेट, जीएसटी का रेट जो स्लैब है वो अभी है, तो एक ही रेट होना चाहिए सर। रेट्स को रैशनलाइज करना पड़ेगा। अभी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। अभी 6 या 5 रेट तो स्लैब्स अभी हैं और हर बार नए आइटम जुड़ते हैं, कुछ निकल जाते हैं। जब गुजरात चुनाव आते हैं तो कुछ आइटम उसमें से निकाल देते हैं, कुछ पॉलिटिकल फायदा देखने के लिए। तो टैक्स रिजीम स्टेबल नहीं है। जीएसटी का जो क्लासिफिकेशन है वो अभी तक इरेशनल है, उसको रैशनल बनाना पड़ेगा। और हर निवेशक एक स्टेबल लैंडस्केप देखना चाहता है। इस सरकार में इतनी बार अदला बदली होती है, लोग कंफ्यूज रहते हैं। और मैं तो कहता हूं जो छोटा व्यापारी है, धंधा करने वाला है, उसको कंप्लायंस करने के लिए बहुत मेहनत और बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है। तो स्लैब्स को रैशनलाइज करना चाहिए। लेकिन अभी जो मैं देख रहा हूं, जो भारत देश का टैक्स कलेक्शन है वो अधिकांश भारत जीएसटी का मतलब कंज्यूमर बेस्ड टैक्स, तो इंडायरेक्ट टैक्स कंज्यूमर दे रहा है, हमें पता भी नहीं पड़ता हमारी जेब से कितना पैसा जा रहा है। तो वो तो उसमें कोई हमको टैक्स ब्रेक मिल नहीं सकता, कंसेशन मिल नहीं सकता। लेकिन जो लाखों करोड़ के मालिक हैं उनको आपके लोन राइट ऑफ कर देते हैं, आप टैक्स ब्रेक दे देते हैं, आप कंसेशन दे देते हैं, आप सब्सिडी दे देते हैं। तो ये जो डिसबैलेंस्ड अप्रोच है, इसके विरोध में हम लोग हैं। सचिन जी, आपने भी मध्यम वर्ग की बात की, जो टैक्स स्लैब बना हुआ है, तो मध्यम वर्ग तो दोनों ओर से परेशानी के पॉलिटिकल पार्टियों में जो रेवड़ी बांटने का जो सिस्टम शुरू हुआ, उसके लिए कोई टैक्स स्लैब कोई सरकार कम करने वाली नहीं, किसी की भी सरकार, क्योंकि उनको मिडिल क्लास की जेब से लेना और नीचे गरीब या जो वोट बैंक है उनको बांटना है। परेशानी ये है, तो ये कैसे कम होगा?
देखिए, मेरा इसमें राय बिल्कुल स्पष्ट है। भारतीय जनता पार्टी, उनकी सरकार आज प्रदेश में भी है, देश में भी है, उत्तर प्रदेश में भी है। तो जब विपक्ष पे आरोप लगाती भाजपा कि आप लोग रेवड़ी बांट रहे हैं, तो वो काम रेवड़ी वाला हो गया। लेकिन 80 करोड़ लोगों को अब सब्सिडाइज खाना दे रहे हैं, वो रेवड़ी नहीं है। उत्तर प्रदेश में योगी जी लोगों को मुफ्त भोजन दे रहे हैं, मुफ्त यात्रा करा रहे हैं, वो रेवड़ी नहीं है। विपक्ष की सरकार अगर कुछ करती है तो वो रेवड़ी हो जाती है। पहली बात तो ये मैं गलत मानता हूं। दूसरा, सरकार के संसाधन किसी निजी व्यक्ति के नहीं है, वो जनता की प्रॉपर्टी है। अगर टारगेटेड इंटरवेंशन कर जरूरतमंद लोगों को हम मदद, सहायता, राहत पहुंचाते हैं, वो हम सबको करना चाहिए। लेकिन सिर्फ और सिर्फ वोट बटोरने के लिए, अपने आप को साबित करने के लिए हम लोग घोषणाएं करते रहे, मैं उसको गलत मानता हूं। लेकिन जो डिजर्विंग हमारे देश का बहुत बड़ा तबका है, जो आज मुख्य धारा में नहीं जुड़ा है, और बाकी मुल्कों में होता है, फूड कूपन्स लोग देते हैं, अमेरिका में देते हैं, यूरोप में देते हैं, जो मुख्य धारा में नहीं है उनको आर्थिक सहयोग करना कोई रेडी नहीं हो सकता। ये सरकार की मॉरल और एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम लोगों की मदद करें। लेकिन जो आप कहना चाह रहे हैं, संसाधन ना होने के अभाव में भी आप सिर्फ वोट बटोरने के लिए बोलें, वो मैं समझता हूं प्रिंसिपल रूप में वो गलत है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो चेहरा है, आप देखिए, और कोई करता है घोषणा तो उसको रेवड़ी बोलते हैं, और खुद आप अपनी छाती ठोक के बोलते हैं कि हम 80 करोड़ लोगों को फ्री में सबसे ज्यादा भोजन खिला रहे हैं। तो ये जो उनका कहना और करना है, बहुत बड़ा अंतर है। सचिन जी, पिछले 4 साल में जीडीपी की ग्रोथ रेट जो है सबसे निचले स्तर पे है। सरकार के दावा है 47 तक $5 ट्रिलियन इकोनॉमी करना। आपको लग रहा है आज जो ग्रोथ रेट गिरी है जीडीपी के पीछे वजह क्या है, और क्या आंकड़े सही पाए जा रहे हैं, दिखाई नहीं जा रही, तस्वीर दिखाई नहीं जा रही? दोनों बातें सही हैं, चाहे आंकड़े एनएसएसओ के हों या सरकार के आंकड़े हों। पिछले कुछ सालों में ऑथेंटिक डेटा का अभाव है। जब तक सही आंकड़े हमारे पास नहीं आते हैं, तब तक सिर्फ गेसिंग गेम होता है और सरकार का प्रोपेगेंडा काम करता है। तो सरकार ने जानबूझ के स्टैटिस्टिकल डेटा, सेंसस, एनएसएसओ, तमाम जो डेटा है वो रोक के रखे हैं और वो सिलेक्टिवली रिलीज करते हैं उसको। वो गलत है। यूपीए की सरकार में जो भी आंकड़े थे, अच्छे बुरे, वो जनता के सामने आते थे। ये काम चीन में होता है। चीन के आंकड़े किसी को पता ही नहीं असली में क्या है, क्योंकि जो वो बताते हैं सरकार में छापने पड़ते लोगों को। लेकिन मोटे तौर पर आंकड़ों का अभाव मतलब ट्रांसपेरेंसी का अभाव। दूसरा, जो जीडीपी ग्रोथ अब हुई है, देखिए, देश में जो प्रतिभा है, देश का जो पोटेंशियल है, उसके अनुरूप नहीं है। इस देश में कम से कम 10% जीडीपी ग्रोथ का टारगेट रखें और 20 साल तक करें, तब जाके हम विश्व पटल पर अपनी साख छोड़ पाएंगे। अब इतनी बड़ी आबादी में हम सिर्फ जीडीपी की बात करते हैं, लेकिन जीडीपी पर कैपिटा कितना है? हम $3.5 ट्रिलियन हो सकता है, लेकिन पर व्यक्ति आमदनी कितनी है, उसके आंकड़े देखें, वो असली कहानी बताता है। प्रति व्यक्ति आय कितनी है? देश में जो खाई बढ़ गई अमीर गरीब की, वो कल्पना से परे है। जो अमीर हैं वो इतने दौलतमंद हो गए, इतने बिलियनर बन गए हैं कि कोई सोच नहीं सकता। और जो 2 जून की रोटी नहीं खा पाते हैं, वो और उनमें खाई बढ़ गई है। तो अमीर गरीब की खाई, गांव शहर की खाई, बहुत बड़ा विभाजन आ चुका है। और ये बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि इससे समाज में असंतुलन बनता है। एक्सेस टू रिसोर्स, एक्सेस टू एजुकेशन, अपॉर्चुनिटीज, जॉब्स, और हमारे देश में जो अनएम्प्लॉयमेंट का इशू है, साथ साथ में अंडर एम्प्लॉयमेंट भी है। आज बीए, डबल एमए, पीएचडी करने वाले लड़के लड़कियां क्लास 4 की नौकरी कर रहे हैं। तो अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट, हिस्टोरिक हाई नंबर्स, मतलब आप कल्पना नहीं कर सकते हैं जितने शिक्षित बेरोजगार आज देश में इतने कभी नहीं रहे, आजादी से लेकर आज तक। उसके बारे में सरकार का कोई ध्यान नहीं है। सरकार को सिर्फ हिंदुस्तान, पाकिस्तान, हिंदू, मुस्लिम, मंदिर, मस्जिद, अभी यहां खोदो यहां क्या निकलेगा, वहां खोदो वहां क्या निकलेगा, इस तक सीमित रखते हैं, ताकि पूरे देश का ध्यान वहीं अटका रहे। कभी संभल, कभी मथुरा, कभी अजमेर, नाम लेते रहो, चर्चा होती रहे और लोग अपना व्हाट्सएप देखते रहें और भूल जाएं कि मेरे बच्चे बच्चियों का पढ़ाई का क्या होगा, नौकरी को क्या होगा। तो ये डाइवर्जन टैक्टिक्स हैं और ये पुरानी नई कला नहीं है। भाजपा हमेशा ही लोगों को ध्यान डाइवर्ट करके रखना चाहती है ताकि नए मुद्दे हमेशा आते रहें। अब 10 साल पहले फिट इंडिया, मेक इन इंडिया, योगा इंडिया, खेलो इंडिया, हर 2 महीने में नया नारा आता था। स्वच्छ इंडिया, तमाम तरह के नारे, उनमें से कंप्लीट कितने हुए? और कंप्लीट हुए तो उसके आंकड़े कहां हैं? अगर आंकड़े, तब जाके जमीन पे देखिए क्या हालात है देश के अंदर।
इसके अलावा आपने मिडिल क्लास का जिक्र किया, बजट में इस बार जो आय है 10 लाख तक की आय पर छूट दी जाए, इस तरह की मांग उठ रही है। आरएसएस के मजदूर संघ ने भी इसकी मांग की है। कांग्रेस पार्टी की क्या भूमिका, आप ही चाहते हैं कि जो आय है मिडिल क्लास जो देखिए, बजट बनाना सरकार का काम है, मैं तो वित्त मंत्री करेंगी, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि पिछले 10-11 सालों के अंदर मध्यम वर्ग जो अधिकांश शहरों में रहते हैं या स्मॉल टाउन्स में रहते हैं, उन लोगों को आर्थिक राहत इस सरकार नहीं दे पाई है। गैस का सिलेंडर 900 रुपए का बिक रहा है, 1000 का बिक रहा है, और आपकी वेज इंक्रीज नहीं हो रही है। कारखाने बंद, जो छोटे लघु उद्योग है ना, जो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस हैं, वो लगातार बंद हो रहे हैं। हाँ, जो कुछ बड़े चंद घराने हैं जो लगातार उनका व्यापार फैल रहा है, वो रह गए रहे, काम यहां कर रहे हैं। सरकार की संपत्ति सरकारी बैंक से सब्सिडाइज रेट में 1 बिल्डर कर रहा है, तो उसका तो चांदी है। लेकिन जो स्मॉल स्केल एंटरप्राइज हैं, छोटे लघु उद्योग हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल्स हैं, उनको सरकार राहत नहीं दे पा रही है। और उन लोगों को आज जरूरत है संसाधन की, सपोर्ट की और कंसेशंस की। मैं उम्मीद करता हूं कि इस बजट में वित्त मंत्री महोदया सारे काम छोड़कर उन लोगों को राहत दें जो डिजर्विंग है, जो मेहनत करते हैं, टैक्स देते हैं। इस देश में 5% लोग इनकम टैक्स दे रहे हैं, तो टैक्स बेस कैसे बढ़ेगा? और जो एग्रेरियन क्राइसिस है आज देश में, सच में खाद के दाम, यूरिया के दाम आसमान छू रहे हैं, लोगों के पास संसाधन नहीं है। और एमएसपी पे हमने कहा था कि आप एक ऑफिशियल गारंटी लेकर आए। जब किसान आंदोलन हुआ था तो सरकार ने वादा किया था कि हम एमएसपी में एक लीगल फ्रेमवर्क लेकर आएंगे। पूरे देश में कांग्रेस इकलौती पॉलिटिकल पार्टी है जिसने कहा चुनाव से पहले कि एमएसपी पे हम लीगल गारंटी लेकर आएंगे सरकार बनाने के बाद। भाजपा ने सरकार में वादा किया था वाइल बीइंग इन गवर्नमेंट एंड दे हैव नॉट डिलीवर्ड। आज भी किसान आंदोलन कर रहे हैं दिल्ली में बैठ के। तो कृषि पर ध्यान नहीं है, एम्प्लॉयमेंट पर ध्यान नहीं है, इन्फ्लेशन पर ध्यान नहीं है। ध्यान सिर्फ इस पे है कि हम वोट लेके सरकार कैसे बनाए। तो उसमें मुझे लगता है वो समय आ गया कि हम आर्थिक वास्तविकताओं को सरकार समझे और उसके अनुरूप काम करे। दिल्ली चुनाव को लेकर मेरा सवाल है, आपके सारे आप पूछो और भी 2-4 रुपए। इंडिया गठबंधन की जो साथी है, सपा होगी, ममता होगी, यहाँ आज ठाकरे सेना ने भी कहा है कि वो आपका समर्थन करते। क्या वजह की कांग्रेस आपकी जो साथी है? देखिए, इंडिया अलायंस पहले मजबूत था, आज मजबूत है, आगे मजबूत रहेगा। अलग अलग राज्यों में अलग अलग परिस्थितियां हैं। मैं उदाहरण देता हूं आपको। झारखंड में चुनाव हुआ, कांग्रेस ने मिलकर चुनाव लड़ा, हम सरकार के पार्ट हैं, वहां वो परिस्थिति थी। जम्मू कश्मीर में हमने मिलकर चुनाव लड़ा, लेकिन सरकार के पार्ट नहीं है। बाई इलेक्शन राजस्थान में हुए, कांग्रेस पार्टी हम अलग अलग चुनाव लड़े वहां पर। दिल्ली में हमारा गठबंधन लोकसभा के लिए था, लेकिन आज की परिस्थिति में हम लोग अब अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये कहना कि इससे इंडिया अलायंस नेशनली कमजोर पड़ेगा, मैं मानता हूं गलत है। कि हमारा गठबंधन जिन मुद्दों को लेकर हमने किया था, संविधान हो, देश में जो हालात बने भाजपा के शासन में, उन मुद्दों पर हमारी आज भी एक राय है कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग दलों के साथ अलग अलग परिस्थितियां पैदा होती हैं। तो मुझे लगता है हमारा उद्देश्य, कांग्रेस पार्टी का उद्देश्य यही है कि जहां हम चुनाव लड़ रहे हैं वहां मजबूती से लड़ें, अच्छे परिणाम लेकर आए। सर, आप जिक्र करें कि इंडिया अलायंस वीक नहीं हो रहा है, लेकिन जिन्हें राज्यों का आप एग्जाम्पल ले रहे हैं, वहां कहीं कांग्रेस जरूर कमजोर पड़ती नजर आ रही है। तो ममता बनर्जी हो, उद्धव ठाकरे हो, फिर आपका साथ छोड़ता आ रहा है, तो प्रेशराइज। ये कहना बिल्कुल गलत है। कोई किसी का साथ नहीं छोड़ रहा। जैसा मैंने कहा, समय के साथ चुनावी स्टेट्स को देखते हुए, परिस्थिति को देखते हुए कभी कोई निर्णय लेने पड़ते हैं। लेकिन इंडिया अलायंस का जो फॉर्मेशन था, जिन मुद्दों को लेकर हम इकट्ठे आए थे, सदन के अंदर, सदन के बाहर, आज भी वो हैं, हमेशा रहेंगे। लेकिन सर, पृथ्वीराज चौहान की तरफ से कहा गया है कि जो अरविंद केजरीवाल है वो जीत जाएंगे, ऐसा उनकी तरफ से स्टेटमेंट करा है। उनका एक और स्टेटमेंट आ गया, उसको पढ़ लीजिए। मैं इतना कहना चाहता हूं कि जहां जौन सा दल चुनाव लड़ता है, कोई हारने के लिए नहीं लड़ता है। नोबडी फाइट्स टू लूज इलेक्शंस। जब परिस्थिति ऐसी है कि हमको चुनाव लड़ना है, स्टेट यूनिट्स की कुछ राय होती है, उसको पार्टी को मानना पड़ता है। तो हर स्टेट की अलग परिस्थिति है। अभी बाई इलेक्शन हुए थे उत्तर प्रदेश में, वहां हम लोगों ने कंटेस्ट सपा ने किया था। तो हर स्टेट के अलग अलग लैंडस्केप बनता है। लेकिन दिल्ली के अंदर हम लोग अपने दम पर चुनाव अभी लड़ रहे हैं फिलहाल, और मुझे लगता है अच्छा परफॉर्मेंस हम लोग करेंगे। बीजेपी की तरफ से ऑपरेशन लोटस चलाया जा रहा है, फिर चाहे वो कोई भी राज्य हो, लेकिन इंडिया गठबंधन कहीं ना कहीं लड़खड़ाती नजर आ रही है। अभी बीएमसी के चुनाव महाराष्ट्र में होने वाले हैं, लेकिन दिल्ली में अभी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसको किस तरीके से देखते हैं बांग्लादेशियों को लेकर? मैडम, पहली बात तो अभी चुनाव दिल्ली में हो रहे हैं और दिल्ली पे हम चर्चा कर चुके हैं। बीएमसी चुनाव की चर्चा तो भी कोई है नहीं। जब चुनाव आएंगे तभी चर्चा अभी करेंगे। से उद्धव ठाकरे ये कहना है कि उनका
कहीं ना कहीं पार्टी अलग महाराष्ट्र में बीएमसी का चुनाव लड़ेगी, क्योंकि उनको हमेशा एक मजबूत धक्का मिला है, तो इसको किस तरीके से देखेंगे? वो उनकी राय हो सकती है, लेकिन इंडिया गठबंधन के संदर्भ में, महाराष्ट्र के संदर्भ में बीएमसी इलेक्शंस को लेकर अभी कोई निर्णय लिया नहीं गया। जब चुनाव आएंगे तब चर्चा इस पर करेंगे। दिल्ली का इलेक्शन है, आपका मेन कॉम्पिटिटर कौन है? आपकी पार्टी है या बीजेपी? हमारा मेन कॉम्पिटिटर, हम लोगों की जो पहले परफॉर्मेंस रही है बहुत अच्छी नहीं रही है पिछले 2 चुनावों के अंदर। हम चाहते हैं हम अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर करें, और आप सभी जानते हैं कि दिल्ली में हम लोग विपक्ष में हैं, रहे कई सालों से। हमारा अलायंस, जैसे बंगाल में हम लोग चुनाव लड़े थे, लेकिन हमारा अलायंस नेशनल लेवल पर था, और हम लोग किसी और की चर्चा ना करके अपनी चर्चा करते हैं कि हमें अपना परफॉर्मेंस बेहतर करना है, और हम अपनी सरकार वहां लेकर आए जब भी हमको मौका जनता देगी। सबके साथ होता है भाई, जब चुनाव लड़ते हैं तो जीता तो एक ही है ना, हारने वाले बहुत होते हैं, जीतने वाले एक ही होता है। सचिन जी, इस समय महाराष्ट्र में भीड़ का एक मुद्दा सामने आया, आपको पता होगा। कल अजित पवार अमित शाह से भी जाके मिले, उनके ही कहने के एक मंत्री के इस्तीफे की लगातार मांग की जा रही है। अब तक महाराष्ट्र का इतिहास में तकरीबन 4 से 5 मंत्रियों के अलग अलग मामलों को लेकर आम आदमी पार्टी ने महज एक बड़े बड़े शहरों में छोटी बातें होती है, मुंबई में अटैक हुआ था, ये बयान दिया था, उनको इस्तीफा देना पड़ा था। इतना बड़ा हत्याकांड हो गया, एक सरपंच का इतना बड़ा आंदोलन होगा, 1 महीने हो गया यहाँ पे, तो ये इस्तीफे की मांग वहीं की वहीं है। और ये सवाल तो आपको मुख्यमंत्री से पूछना चाहिए ना, मैं तो विपक्ष में हूं, और मैं चाहता हूं कि इस देश में, प्रदेश में नैतिकता जिंदा रहे, और जिस प्रकार की घिनौनी घटना हुई वहां पर बहुत दर्दनाक रहा, जो मैंने प्रकरण के बारे में जानकारी प्राप्त करी है, और उस पर निर्णायक कुछ निर्णय सरकार को करना चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन जो भी इसके लिए जिम्मेदार है, जिनके तार जुड़े हुए हैं, जवाबदेही तो बनती है। और राजनीति में अगर आप कोई मॉरल स्टैंड नहीं लेते हैं तो जनता भी इस बात को देखती है। मुझे लगता है इसमें मुख्यमंत्री जी को संज्ञान लेकर उचित कार्रवाई करनी चाहिए, और इतिहास गवाह है, जब भी ऐसे कभी आरोप लगे हैं या कोई प्रकाश में आए हैं, लोगों ने कार्रवाई करी है। क्या मजबूरियां हैं कोलिशन पॉलिटिक्स की या इस प्रदेश की, वो समझ से परे है, लेकिन कार्रवाई करनी चाहिए। अभी बहुत सारी खबरें आ रही है कि महाविकास अघाड़ी में एनसीपी हुए, अजीत पवार गुट बहुत कोशिश कर रहे हैं कि शरद पवार गुट की एमएलए एमपी को पिकअप लाएं, शिवसेना भी बहुत कोशिश कर रहे हैं कि उद्धव गुट के साथ एमपी एमएलए को लाएं। तो कहीं ना कहीं ये पिक्चर दिखाई दे रही है कि कांग्रेस को आइसोलेट करने की कोशिश की जा रही है, बाकी सब पार्टी सब। मेरा आपको यही सुझाव है कि आप अफवाहों पर ध्यान न दें, क्योंकि यहाँ क्या है, चुनाव खत्म हो गए हैं, अब बहुत टाइम सबके पास है, तो सब चर्चा कर रहे हैं। लेकिन मेरे को लगता है क्लैरिफिकेशन पवार साहब की तरफ से, एनसीपी की तरफ से आ चुका है, खुद बोले हैं उन्होंने जो बोलना था उनको। मैं उनकी पार्टी की तरफ से कुछ बोलना नहीं चाहता हूं, लेकिन इतना बोलना चाहता हूं कि प्रदेश और देश में इंडिया अलायंस जो गठजोड़ था वो मजबूत है और मजबूत रहेगा। सचिन जी, इसके अलावा आज शरद पवार जी ने और ठाकरे सेना की तरफ से भी कहा गया था कि विधानसभा चुनाव में आरएसएस ने जमीन पर, और हरियाणा में भी आरएसएस ने जमीन पर उनके कार्यकर्ता ने बहुत अच्छा काम किया, उनसे सीखने की जरूरत है। आपका भी सेवा दल है, वो उतना एक्टिव नहीं रहा है, तो आप चाहेंगे कि जिस तरह से, जैसे वो मान रहे कि जमीन पे काम हो रहा है, कांग्रेस को भी इस तरह से जमीन पर उतर कर काम करने। देखिए, मैं तो किसी और के बारे में नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन अभी बैंगलोर में हम लोगों की एक मीटिंग हुई थी वर्किंग कमेटी की। वहां पे खड़गे जी, राहुल जी ने ये घोषणा करी है कि 2025 वाला जो साल है, ये पूरा साल संगठन को समर्पित रहेगा। हमारी पार्टी के फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस, हमारी स्ट्रक्चर, हमारा मंडल, ब्लॉक, जिला, प्रदेश, कार्यकारिणी, उस सब को हमें पुख्ता करना है बूथ लेवल तक। और इस पूरे साल में हम लोग संगठन को प्राथमिकता देकर जो थोड़ी बहुत कमियां हैं उसको पूरा करेंगे, दुरुस्त करेंगे। और किसी के साथ कंपेयर करना मैं मानता हूं ठीक नहीं है, क्योंकि हो सकता है जिनका आप नाम ले रहे हैं उन्होंने काम किया हो, लेकिन उनकी पृष्ठभूमि क्या है, उनकी विचारधारा क्या है, वो किनके साथ खड़े हैं, वो देश में जो महात्मा गांधी जी के हत्यारे थे उनके प्रशंसक हैं या उनके आलोचक हैं। तो ठीक है, आप मेहनत करें, आप परिणाम 1-2 चुनाव हार जीत जाते हैं, लेकिन वैचारिक और सैद्धांतिक जो पृष्ठभूमि है वो देश की राजनीति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए हम लोग अपने आप को और मजबूत कर रहे हैं, और पूरा 2025 आप सभी जानते हो 15 तारीख को कांग्रेस पार्टी का जो मुख्यालय है उसमें हम तब्दीली कर रहे हैं। एक नए ऑफिस में हम लोग जाएंगे, एक नई शुरुआत नए साल से होगी मकर संक्रांति के बाद, और पूरे 12 महीने संगठन को लगातार ताकत, बल, मजबूती देने का काम करेंगे। और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता पूरे देश में, और मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं, हमारे देश में बहुत से दल हैं, कुछ हमारे विरोधी हैं, कुछ हमारे समर्थक हैं, लेकिन पूरे देश में, प्रत्येक राज्य में, प्रत्येक जिले में, प्रत्येक गांव में, राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी को अगर कोई चुनौती देकर पराजित कर सकता है राष्ट्रीय स्तर पर,
वो कांग्रेस पार्टी है। और कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता आज भी हर गली घर झोपड़ी में मौजूद है और हमेशा रहेगा। हम सबको साथ लेकर चलेंगे। और ये सारी जो आप चर्चा करते हैं ये सिर्फ प्रोपेगेंडा हो सकता है, लेकिन इंडिया अलायंस का जो गठबंधन हुआ था वो मजबूत था और अब मजबूत रहेगा। आने वाले समय में हम मिलकर काम करेंगे और एनडीए को चुनौती देंगे। लास्ट क्वेश्चन। एक सवाल है आपके होम स्टेट से 1 साल हो गया है, उपचुनाव हुआ, 1 सीट जीती आप कह रहे हैं सर पार्टियों से दोनों में टूट गया, वहां कांग्रेस को मजबूत के लिए क्या करें? एक तो आपको मैं सलाह, किसी एक चुनाव में अलायंस ना होना इसका मतलब अलायंस टूटना नहीं होता, अलायंस ना होना होता है। ठीक है, उनके साथ भी जो नेशनल अलायंस है हमारा वो अभी आज भी मौजूद है। वो बाई इलेक्शन था, किसी की होम सीट थी, पार्टी की लोकल यूनिट्स की अलग राय थी, तो हम लोग वहाँ पे अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, उस पर भी हम लोग कार्रवाई करेंगे। लेकिन बाई इलेक्शंस सेटिंग गवर्नमेंट होती है, अलग तरह का प्रभाव रहता है, तो 100 तरह की बातें आती हैं। लेकिन बात सही है, वहाँ पे और हमको मेहनत करने की ज़रूरत है। लेकिन आप लोग बार बार जो संकेत कर रहे हैं इंडिया अलायंस के ऊपर, उस पर मैं समझता हूँ हो सकता है कि भाजपा के साथी कुछ चाहते हों, कुछ मिसचिफ क्रिएट करना, कुछ अफवाह फैलाना, कुछ खबर प्लान कर देना, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि हमारा जो कमिटमेंट है वो स्वयं के लिए नहीं है। देश में जो खतरा आया था या अभी भी है संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के ऊपर, उस पर हम सब लोग साथ हैं। और इस मुद्दे को लेकर चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे कोई और दल हो, हम सब मिलकर काम कर रहे हैं। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। एक लास्ट सवाल है, आपने डिविसिव पॉलिटिक्स का आरोप लगाया भाजपा के ऊपर, डिविसिव पॉलिटिक्स का आरोप लगा रहे हैं। एक मुद्दा छिड़ा है एसआईटी फॉर्मेशन को लेकर। एसआईटी फॉर्म हुई है संभल मुद्दे को लेकर, जो 1978 में राइट हुए थे। अब सरकार इससे लेकर एसआईटी फॉर्म कर रही है, कहती है कि 1 हफ्ते में आप रिपोर्ट सबमिट करेंगे। तो जिसके लिए आप आरोप लगा रहे हैं कि डिविसिव पॉलिटिक्स कर रही है, डाइवर्जन पॉलिटिक्स कर रही है, आप लोग शुरू में कहा, आप मेरी बात को रिपीट ही कर रहे हैं। हमारा एक एक्ट पास हुआ था 91 के अंदर, वर्शिप एक्ट को लेकर। उसमें सिर्फ कांग्रेस ने पास नहीं किया था, वो पूरी पार्लियामेंट ने पास किया था। तो जो मुद्दे बहुत पुराने सेटल हो चुके हैं, उनको जानबूझ के कुरेदना कहीं ना कहीं उन ताकतों को बल देता है जो देश में एकता और अखंडता नहीं चाहते हैं, जो देश में बंटवारा मतलब बिखराव चाहते हैं, आपस में टकराव चाहते हैं। और समय आ गया कि आक्रमण की राजनीति, टकराव की राजनीति, भेदभाव की राजनीति, पक्षपात की राजनीति, धर्म, जाति, मजहब, जुबान की जो राजनीति होती है, फिर हम विराम लगाएं। ये देश सबका है, इसमें सबका अधिकार है। संविधान ने सबको बराबर का अधिकार दिया है और संविधान की रक्षा करना हम सबकी जिम्मेदारी है। सत्ता में आज कोई है, कल कोई और होगा, लेकिन देश पार्टियों से बड़ा है और संविधान से कोई पवित्र ग्रंथ नहीं है। उस ग्रंथ की अगर हम स्पिरिट को नहीं मानेंगे, उसकी अवहेलना करेंगे, संवैधानिक संस्थाओं को लगातार हम लोग कमजोर करने का काम करेंगे और एक सोचे समझे तरीके, साजिशपूर्ण तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस को हम लगातार वीकन करते रहेंगे, तो मैं समझता हूं इस देश के लिए एक अच्छा संकेत नहीं है। हमारे देश में चाहे जुडिशरी है, इलेक्शन कमीशन है, बाकी इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको लगातार एक सिस्टमैटिक तरीके से हम वीकन करते रहेंगे, तो ये अच्छा संकेत हमारे लोकतंत्र के लिए नहीं है। तो हम सब मिलकर साथ रहें, इंडिया अलायंस के हम सभी लोग, और इन्हीं मुद्दों को लेकर गठबंधन हुआ था। जो हमारे साथी इंडिया अलायंस के हैं आपस में सामने चुनाव लड़े हैं, लेकिन जब देश के सामने चुनौती आई थी तब हम सब लोग इकट्ठे आए थे और वो चुनौती भी खत्म नहीं हुई है। इसलिए हम लोगों का साथ है और बरकरार रहेगा। बस ये थोड़ा सा रह गया था गलती से, लेकिन औपचारिकता करनी पड़ेगी। आपका महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपके पास 5 मिनट है तो ऑफ रिकॉर्ड मुझे बंद करना है। 5 मिनट नसीम भाई, ऐसा है, मेरे को अच्छा अनुभव हो गया कि अरे नहीं, जनरल चर्चा ही सही, जनरल चर्चा ही सही। थैंक यू। सामने क्यों खड़े रहते हो? अरे अकेला अंदर ही नहीं आ रहा। Are you sure? Here's the 30-second lesson on what legends know. Never ask a bride why she's getting married. Don't wear a skirt on a windy day. Deodorant is not a shower. Don't sniff chili flakes. And don't forget, saving is not investing. Legends don't just save, they invest in mutual funds.
Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully. For today, my offering to you is an episode of First Person Second Draft. You know that series where I occasionally talk about a big story I might have covered in the past, interactions with interesting people that I have had in the past, and how they become relevant now. When they become relevant now, or they come back in the news cycle, I talk about them with some current knowledge as well, while using current knowledge and context to update those earlier experiences. So this first person second draft is Rao. I've spoken about him in the past also, but those were different contexts and different details. Why does he come back into our discussion and into our lives and in our minds today? That's because Modi government has approved a memorial dedicated to former President Pranab Mukherjee. You've seen Pranab Mukherjee's daughter. In fact, you will also see her interview with the print. Neelam Pandey, my colleague, has interviewed her. You will see that interview. The center has approved a memorial dedicated to him, and as the center has done it, P.V. Narasimha Rao's grandson N.B. Subhash has attacked the Congress party, saying the party has consistently ignored its leaders who sacrificed entire lives for its benefit. After all, Narasimha Rao kept the Congress party in power for 5 full years. He also said, N.B. Subhash, Narasimha Rao's grandson, he also said both Pranab Mukherjee and P.V. Narasimha Rao are stalwarts of Congress. The party would have fallen apart without them, and this is a slap on the face of the Congress. What is a slap on the face of the Congress? That it is the BJP that has approved a memorial for him, while the Congress had not even made a demand for it, as the Congress hasn't for P.V. Narasimha Rao. That's the reason he's talking about it. The memorial that the center has approved for Pranab Mukherjee will be located in Rashtriya Smriti Complex, situated in the Rajghat area. It is the same patch, say on the western banks of the Jamna, along which Rajghat, Mahatma Gandhi's memorial, then Shanti Wan for Jawaharlal Nehru, Shakti Sthal for Indira Gandhi, Vijay Ghat for Lal Bahadur Shastri, Sadaiv Atal for Atal Bihari Vajpayee. That's where all of these are located. That's where a dedicated piece of land has been set up for other memorials. And that is where Pranab Mukherjee will be given his pride of place as well. So Rao's family is asking, so what about P.V. Narasimha Rao? He was also a prime minister and a very consequential prime minister. In fact, in December, when Dr. Manmohan Singh passed away, the BJP and the Congress traded barbs over memorial space for Dr. Manmohan Singh. BJP had questioned the Congress and asked, why was P.V. Narasimha Rao not given the funeral he deserved? Not only that, even his body was not allowed to be brought into AICC. This is when UPA was in power and Manmohan Singh was Prime Minister. In fact, following that, Telangana Assembly passed a resolution seeking the Bharat Ratna for Manmohan Singh. Bharat Rashtra Samiti, that is BRS, and its leader K.T. Rama Rao urged the state government to also persuade the center to establish a memorial for P.V. Narasimha Rao in the national capital as well. So Narasimha Rao that way has come right back in the news cycle. That's the reason I say he's the apparition who refuses to go away. Now, depending on where you are on his politics, you can say he was a good man or a bad man, or he made a good contribution or not such a good contribution to Indian politics or the history of Indian governance or to national interest. You can be on one side or the other, but the fact is that he is persistent. In life and in politics, he was thick-skinned, but in death, he's been indelible. The more you think he's been forgotten, or his party in particular tries to make him forgotten, he keeps coming back. That's the reason I thought I will tell you a little bit more about my interactions with P.V. Narasimha Rao, because as I said just now, he was a very consequential prime minister. He was also a fascinating leader. P.V. Narasimha Rao, in fact, was the first serving Prime Minister of India that I got to meet one-on-one. And I had done very little to deserve that honor. It was one of those coincidences. In the course of an interview in Kabul in the winter of 1991, Najibullah, the Afghan dictator then, tapped me on the elbow. See those pictures on that screen of that interview? He tapped me on the elbow and asked through an interpreter, I am told you are an important person. Can you tell your Prime Minister, Mr. Rao, one important thing on my behalf? I was a mere reporter, I said.
I'm not so important. But Najeem said mere reporters were not sent to the Afghan war 5 times in a year and that he had done his homework. Now, what homework he had done, I don't know, but if he thought so, so be it. Then he told me what he wanted conveyed to Rao, that he wouldn't trust his own ambassador with, and that he said our ambassador was not taking seriously. Now, salted away for your memoirs, I said to myself, but on my return, I did happen to mention this as a joke at a party to MJ Akbar, who was then very close to Narasimha Rao. He said, I must tell the Prime Minister. I laughed. I didn't know any Prime Minister well enough for me to call them. I had never met any Prime Minister one-on-one, so I just laughed. The next morning, there was a call from the Prime Minister's office and an audience was offered. Rao sat there slumped on his sofa, slurping at his porridge uninterestedly as grandfathers tend to do, but spraying on the napkin around his neck like this. I told him the story, the message laced with many apologies, that I did not know what business I had to be there, that I had no idea why Najib had chosen me for this and not our or his ambassador, or that I was possibly only being made a fool of. I said also that I told Najibullah that I am a reporter, I don't have any such stature, and I would like to now repeat that to our Prime Minister Narasimha Rao as well, that I feel so awkward and silly to be drawn into all this, and would he please keep what I said always to himself. He smiled, he patted his belly thrice because he was sprawling like this, crossed his arms and said, what goes in there stays there forever. This was still the winter of 1991. Narasimha Rao was still quite a new Prime Minister. Rao, in fact, was not one to take it so lightly. He took lots of notes with a lead pencil and then gave me a long discourse on the Afghan problem, a masterly analysis on complexities that emerge when tribalism and ethnicity clash with religion in the absence of a well-defined nationalism. What the message from Najibullah was, I have kept it for myself. In fact, I wrote an account of these conversations earlier in 2017, of which I will share a link with you, but then I had not mentioned what this message was, but now enough time has passed so I can mention it to you. Najibullah wanted a certain amount of money transferred by Government of India to some recipient in a Central Asian country. And what was that money meant for? That was to pay for the ammunition that his army needed desperately at that point of time. As I have reflected back on that conversation, almost 33 years back now, all these years, this keeps coming back to me, and I've always thought that no Indian Prime Minister except maybe Jawaharlal Nehru could have packed so much insight and intellect in a 30-minute discourse on so complex a problem. It's a bit sad to write this today when the entire country has forgotten him. His party is trying very hard to make sure you forget him. His grandson is fighting for a funeral for him. The fact is, he's our most vilified and deliberately misunderstood Prime Minister. I had written something similar also on the day he was convicted in the trial court, later acquitted. Everybody was cursing him then, and his party was using the lofty line of let the law take its own course. I had never seen the Congress party use that line when it came to anyone they truly regarded as their own. Not when Mrs. Gandhi, senior Mrs. Gandhi, Indira Gandhi, was disqualified for electoral malpractices by the Allahabad High Court. Her party had then called it a minor traffic offence. Not when Sanjay Gandhi was produced in courts to face so many cases of emergency excesses and corruption. Rao, in fact, was a bit philosophical about this. He said in a conversation, I think it was part of the Walk the Talk, two-part Walk the Talk that appeared on NDTV, अरे भाई कोई कहता है मैंने मुर्गी चुराई, कोई कहता है मुर्गी के अंडे, पर एक बात पे तो सब राजी हैं कि चोर तो मैं हूँ. Somebody says I stole chickens, others say I stole eggs, but one thing everybody agrees on, that I am a thief. That was his philosophical way of looking at this. Rao, in fact, was not the most accessible of prime ministers. He was also certainly the second most uncharismatic in our history after H.D. Deve Gowda. That takes some doing. But he was always on the job. Always on the job. Much has been written about his shepherding of a very, very vulnerable India through the collapse of the Cold War, the opening of the economy and the foreign policy.
his masterful marginalization of Benazir Bhutto in the most virulent phase, in her most virulent phase, when Kashmir and Punjab were both on fire and a new one was being lit out of Ayodhya. This was when the Americans were constantly breathing down India's throat. We needed IMF bailouts, and the entire international human rights community had a single point focus, Kashmir. Who else could have decided to upgrade relations with Israel in that critical phase, but waited patiently for Yasser Arafat to come visiting New Delhi to make a formal announcement and get him to endorse it at a press conference the very same day. And it was all well organized. At Arafat's press conference, somebody asked him a question that India just decided to upgrade its relations with Israel. Do you think it's a good idea? And Arafat said something like, yes, because peace talks are going on, it's better to have India as a friend of the Palestinians on the table. Why should India be away? That's how smart Rao was. Rao's style, in fact, was so hopelessly understated as to amount to self-denial, which is no virtue for a politician. But his method was thorough and effective. Cynicism may have been his personal style statement, but what else could you have expected of somebody whose own party was unwilling to give him credit for what he was doing right? The biggest problem was, if he didn't want to, he told you nothing. As if any extra word he spoke would give a national secret away. Are we doing better than before in Kashmir? I once asked him. You see, we will do something, they will do something. What we get will always be a net of that, he said. Very helpful. I mumbled. Now the fact is that when Benazir was making all those nasty statements, Jagmohan ko hum jag mo han kar denge, she had said that at Muzaffarabad just before Narasimha Rao had taken over. And when she returned to power, she was fired. All those fiery speeches, threat of war with India were not able to save her that time. But she came back in 1993. Narasimha Rao was still there. In some interview, she was asked if she saw any hope of making progress with India now or resuming talks. And she said something like, when the Gandhis were in power, they were people of class. You could go and relate to them. You could talk to them. Now they have this person. We don't know. It was quite an elitist response. And we could see that Narasimha Rao did not like it one bit. And he told people around him, and he also mentioned it to me in a conversation, that I will make a horrible example of her. And the fact is that Kashmiri insurgency as the Punjab insurgency were both destroyed under his watch. And they were destroyed quite conclusively at that point of time. His tenure ended in 1996. 3 years later, the war came in Kargil. It was during the peak of the Kargil war that I dropped by one afternoon. The politicians really love you when they are out of power and ignored by everybody, particularly by their own parties, and you seek time with them. Then they are very generous and their minds and hearts also open up and they talk a bit more also. With the Kargil war going on and at that point not going very well for India in the early stages, I dropped by one afternoon for a few words of wisdom from the old man. How would this old fox have handled a crisis like this? Would he have buckled under? Would he have escalated the war, crossed the LOC? I went, therefore, for yet another lesson or tutorial in Narasimha Rao's art of crisis management. This is when he opened up a bit more on what he did the day Babri Masjid fell. I wrote about this in detail in a piece on the 25th anniversary of the demolition of the Babri Masjid. The piece was headlined, and I will share a link with you with the description. The piece was headlined, Narasimha Rao felt betrayed over Babri. He avenged it by trapping L.K. Advani in Hawala scandal. What was his explanation? He said, people wanted me to impose the president's rule. I could have imposed the president's rule in Uttar Pradesh, immediately dismiss the government and impose the president's rule. But president's rule means you have to find advisors. Advisors have to go and take over on behalf of the central government. Until then, that takes at least 24 hours. Even if you fast forward it, it will take several hours for these people to go in and take over. By that time, whatever is happening in Ayodhya will keep on happening, and you will not even be able to hold the BJP government accountable. And that is the reason he did not dismiss it right then. And then he said, look, I could have ordered the CRP to open fire. But think about it. This is India. People who were going out to bring down the mosque, what is it that they were chanting? They were chanting the name of Bhagwan Ram, Lord Ram. And human beings, which is the troops of my paramilitary forces are,
when they would have opened fire to kill people, whose name would they be chanting? Because it's not easy to kill people, open fire and kill people. They'll also be chanting Lord Ram's name. And suppose they had gotten together, what kind of a crisis India would have faced? That would have lit a fire that nobody would have been able to control. So I thought, all right, if I have to take this down by myself, if this blame has to go with me to my funeral pyre, so be it. We talked about some of the other crises that he handled. How he handled the situation with the news of the burning of Charare-Sharif Shrine in Kashmir came, on how he swung the settlement of the siege of Hazratbal, and on the way the rules of engagement with terrorists were evolved in Punjab and Kashmir. If among the few sympathizers in the courtroom on the day of his sentencing in that corruption case, you saw KPS Gill, he actually was present in the courtroom on the day of the sentencing of Narasimha Rao, you can draw your own conclusions. In fact, KPS Gill's family had a memorial meeting for him on his 90th birth anniversary just about a couple of weeks back, and I had the honor of being invited to speak there. Now, KPS Gill was there as a man of honor with Narasimha Rao because he knew what Narasimha Rao had done to bring normalcy back to Punjab. And that tells us, KPS Gill's presence there tells us that not all men are so devoid of a sense of honor as the usual congressman. This is no political obituary of Narasimha Rao, nor is this any time to write obituaries because obituaries were written a long time back. He died more than 20 years ago. You will learn a lot more on him from Binay Sitapati's biography, Half Lion, published by Penguin in 2016. What I'm sharing with you, the set of experiences in this episode of First Person Second Draft, what I'm sharing with you is merely to underline this fascinating life which achieved so much in 5 impossible years and died so friendless. And this is nothing to do with any moral outrage over his corrupt ways, because Doodh ka dhula kaun hai? Who is it that is totally non-corrupt in our public life? Rao was punished by the middle class for keeping the BJP out of power for a full 5 years, 1991 to 1996. Why else would the middle class hate someone who gave them so much through economic reforms? Similarly, he was punished by the Congress party for keeping the Gandhi family out of power, for daring to believe that he could lead the Congress party and keep it in power, whatever the cost, in the absence of conviction, and later did not even allow his body to be brought into its headquarters. Now, in conclusion, I can say one thing. Congress party will do nothing for Narasimha Rao. But chances are that the BJP at some point is going to embrace him. And when they embrace him and they set up a memorial for him, maybe even give him a posthumous Bharat Ratna, chances are that the Congress party would say, "Theek hai na, he was always an RSS BJP man." In fact, they used to say he has khaki chaddies under his dhoti, right? And that he secretly celebrated the pulling down of the Babri Masjid. That was a canard that the Congress party spread for a very long time. It might still happen. However, remember that the one landmark named is in his name. Next time you go to Hyderabad, check it out. From Hyderabad, as you come to the airport, the highway, the expressway that connects Hyderabad city to the airport, that's named after P.V. Narasimha Rao. And who had named it after P.V. Narasimha Rao? When I noticed it for the first time, I thought it might have been done by Chandrababu Naidu or maybe later by KCR, by his TRS then, which is now BRS. It was in fact named after Narasimha Rao by Y.S. Rajshekhar Reddy, the Congress Chief Minister of the state then. So whatever the Congress High Command might have thought of him, Rajshekhar Reddy or YSR understood what he meant for Telugu people. Delivering Sankranti in 10 minutes. The Modi government's decision to build a memorial for former President Pranab Mukherjee has created a political row, as it comes even before one has been announced for former Prime Minister Manmohan Singh. We have with us daughter of former President Pranab Mukherjee, Sharmishta Mukherjee, to speak to us about this controversy and much more. Welcome to The Print, ma'am. Ma'am, to begin with, do you think the government should have announced a memorial for former PM Manmohan Singh first before it did for
former president? This controversy is totally uncalled for, unwarranted. The immediate answer would be that the former President Pranab Mukherjee passed away much before former Prime Minister Manmohan Singh. So if his memorial is announced before, then what is the harm in that? But anyway, I think this is totally uncalled for, because, whose announcement should come first, whose later, there could be some very normal reason for that. There are certain procedures that, when the government, in my case, I can tell you, the government sent me a letter, and after that, you have to send the consent letter. So first, what I was told that it will be announced along with the announcement of Dr. Singh's memorial. Then later I learned through some source that perhaps the formal consent from Dr. Singh's family hasn't come as yet. So yesterday when I went to meet the Prime Minister, I sought an appointment with him to thank him for this. So that time I was told that I can announce it. So, this is a plain and simple thing. It could be just plain and simple technical reason, and also it could be that Dr. Singh's family at the moment is immersed in grief. You have to give them some time. So maybe they are taking some time to give the formal consent letter. Why to politicize it? And Dr. Singh was an extremely dignified person. His family is an extremely dignified family. I know them personally. His daughter, Upinder Singh, was my teacher in college. To unnecessarily politicize these issues, this is, I think, totally uncalled for, and it just doesn't, it belies any kind of dignity. It's totally bereft of any kind of dignity. But the delay in announcing a memorial for former PM Manmohan Singh has been criticized by the Congress. Senior Congress leader Jairam Ramesh has gone to the extent of saying that this is an insult to the first Sikh Prime Minister of India. Why first Sikh Prime Minister? A Prime Minister is Prime Minister. The Prime Minister is the Prime Minister for every citizen in respect of caste, class, religion. So, Dr. Manmohan Singh was not just a Sikh Prime Minister, he was a Prime Minister. He was a great economist. So, just to, identify him with a particular community itself is, I think, a very sad state of, a very sad perspective. And, again, as I say, this announcement in delay, it could be for various reasons. Unnecessarily, why to make such a controversy? And I would like to remind Congress, though they might have forgotten who Pranab Mukherjee was, given their very short-term memory and perspective. But Mr. Pranab Mukherjee happened to be a very, very senior leader of Congress who was associated with the party for 50 years. Before becoming president, he was for 5 years. Before that, he was for 45 years. He was a senior leader of the party and associated with CWC for 30 years. Why, after his passing away, a formal CWC condolence meeting, why wasn't it held? Why did not Congress demand a memorial for my father? And again, if Mr. Jairam Ramesh is talking about Sikh Prime Minister, I can also say my father was the only Bengali president of India. So by not holding a CWC condolence meeting, by not demanding a state memorial for him, is it Congress then insulting the entire Bengali community? I'm saying it in context of Jairam Ramesh ji saying that, the BJP government is insulting a Sikh Prime Minister. So in that context, I'm saying, because I don't like, categorizing between these communities as far as the august offices of Prime Minister and Presidents are concerned. But if Mr. Jairam Ramesh is saying this thing, then I would like to ask this counter question to Congress. But ma'am, a senior leader had apparently said that, having a condolence meeting for former presidents is not really the norm. It is absolutely rubbish, because, I was also told that it is absolutely wrong, but that it doesn't have. But, after my father's death, when I was reading his diaries, I came across this entry that when K.R. Narayanan passed away, so our formal CWC condolence meeting was held,
and condolence resolution, condolence message was passed, which was drafted by my father only. And this is most logical. Congress is the grand old party of India. So the president passes away and CWC doesn't hold a resolution, a condolence meeting. It seemed kind of something wrong with it. But why do you think that happened then? I don't know. I don't know whether it was deliberate, whether it was a utter loss of institutional memory. It was a total forgetfulness about the norms, traditions, conventions of Congress, how Congress conducted itself in certain situations. What is the tradition of Congress? Perhaps the people at the helm of things, around Rahul Gandhi, probably they don't even know about these traditions. Probably they don't even know about these conventions. Maybe it was a total lack of institutional memory. Or if it was deliberate, I don't know. I still don't have the answer that why such a simple thing as a CWC meeting through Zoom, because it was COVID time. So why wasn't it held? I still don't have the answer. Ma'am, a senior Congress MP, Danish Ali, has apparently said that, a memorial is being, it has been announced by the Modi government for Pranab Mukherjee because of his love for the RSS. How do you react to that statement, considering Congress so far has not officially clarified? I would challenge Danish Ali to ask Rahul Gandhi that why did he hug Narendra Modi in Parliament? That same Narendra Modi, Rahul Gandhi's mother, Sonia Gandhi, called Maut ka Saudagar. If by going to RSS and from RSS platform, highlighting, giving a speech about Congress ideology, which talks about pluralism, about inclusivity, about constitutionalism, about secularism, if by doing that, if Pranab Mukherjee becomes a Sanghi, then by hugging Narendra Modi in Parliament, Rahul Gandhi becomes a close associate of Narendra Modi. So I dare Danish Ali or all these people, who say such things, by their own logic, then Rahul Gandhi is an associate of Narendra Modi and he doesn't have any right to criticize him. But do you think the Congress should at least clarify on this comment? Of course, Congress should clarify, but the very fact is Congress not clarifying. That shows that there is some kind of rot in the party. On one hand, they say that BJP is appropriating Congress's legacy. But it is Congress itself which is pushing away their legacy, which is, humiliating their senior leaders. It is current generation of Congress leaders. And Danish Ali, I have heard his name for the first time, and somebody told me that he himself has recently joined Congress. He was with the BSP. He was with BSP. So what does he know about Congress ideology? What does he know about Congress traditions? What does he know? But just for, making some random statement for something. But the sad part of it is that Congress is not saying that this is not our party line. So that means they are actually condoling, they are actually, not condoling is not the right word, they are actually accepting So, this is something Congress need to answer for. That why are they denigrating, why are they humiliating their own legacy? If today I was in Congress, I would have said that, accept it gracefully and say that, even a BJP government, cannot overlook Congress's legacy. The same thing happened during Bharat Ratna, ceremony. Nobody from Gandhi family attended it. Of course, there were other senior leaders. And that is the time, I said that thank you Narendra Modi ji for acknowledging that Congress's major contribution. So that's why, you have given Bharat Ratna to my father, who for the majority of his life was a Congress leader. So, Congress should be gracious enough. Congress should be wise enough. Congress should be politically savvy enough. Forget about gracious. Grace doesn't exist in today's Congress, but they should be politically savvy enough to embrace it, to welcome it, rather than trying to denigrate their own leaders. Right. They did the same thing to PV Narasimha Rao. It's sad, it's tragic. Ma'am, in the past you have talked about, how the party workers feel alienated in the Congress today due to the, current state of affairs and the way they have sort of deviated from the ideology. Absolutely. This kind of
the kind of language is being used, just go through my social media, my timelines, this is not Congress ideology. Congress talk about freedom of expression, they are the upholders of freedom of expression. But anybody dares to, criticize their leader, Rahul Gandhi, they will all pounce on you. So is freedom of expression only when you are praising your leader, not when you are criticizing your leader? So is that freedom of expression? They talk about being inclusive. What is that inclusivity? You are denigrating BJP government. Here is being far more inclusive, I would say. They have built a memorial for PV Narasimha Rao. They are, they have offered land to build memorial for my father, who was a lifelong Congress ideologue, Congress leader. So where is Congress inclusivity in this? Where is Congress tolerance in this? These are the basic values of the Indian National Congress as I knew it, as I read about in the pages, in the history. But I think that Congress lies only in the pages of history. Today, Indian National Congress should change its name and either call it Rahul Congress or probably call it Gandhi Parivar Private Limited or something like that. That will be more honest. Ma'am, you have also been quite vocal about, the treatment of your father by the Congress, the kind of name calling that took place. That is only after, my book was published. Of course, when he went to RSS, it was all kind of, nonsense was being peddled on social media. But Congress, at least at that time, had the decency and I would say the political astuteness. To that time, Congress officially said that Pranab Mukherjee held a mirror to RSS. Because they saw his speech, they read his speech. It was like a total, I would say, a publicity of Congress ideology from RSS platform. So that time they welcomed the speech. Now what has happened suddenly? What has happened after, especially after he passed away?